हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू एक्सपायरी की बात विद कोटक सिक्योरिटीज। मैं हूं सहज अग्रवाल, हेड ऑफ डेरिवेटिव रिसर्च। सो मार्केट्स काफी वोलेटाइल रहे हैं, सो टू से। अक्टूबर का महीना काफी पॉजिटिव सेटअप था, पॉजिटिव मोमेंटम था, और नवंबर की शुरुआत हमने थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ की है। Still we believe the setup is not as bad as it looks on the screen. I think short term sentiment फिर भी टिका हुआ है, अभी कोई मेजर लेवल्स ब्रेक नहीं हुई हैं, गुड चांसेस ऑफ अ बाउंस बैक। फॉर दोज हु डोंट हैव टू मच टाइम, 25,650 25,650 काफी क्रिटिकल लेवल है। यदि उसके नीचे सस्टेन करता है तो ही कॉशियस होना है, अदरवाइज चांसेस ऑफ अ साइडवेज टू पॉजिटिव मूवमेंट। डिटेल में शुरुआत करते हैं एक्सपायरी के बाद की प्रेजेंटेशन की। ये कुछ रेलेवेंट डिस्क्लेमर्स हैं। हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं, ideally that is from the research perspective and educational perspective. Any discussion that we have over here is not particularly an advice. Moving ahead, some pointers. So the medium term outlook for the market continues to remain consolidative. Medium term जब मैं कहता हूँ तो I'm talking about multi-month perspective. हमें लग रहा है कि मार्केट अभी भी एक कंसोलिडेटिव फेज में है। इनफैक्ट ये करेक्शन शुरू हुआ था अक्टूबर 2024 में, एक साल प्रैक्टिकली पूरा हो गया है, पर अभी भी हमें ऐसा लग रहा है कि जो सेटअप है वो फिलहाल भी एग्रेसिव नहीं हुआ है। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक पार्टिसिपेशन रहेगा। अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, बट वन हैज टू बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव इन टेकिंग एग्रेसिव एक्सपोजर। मंथली सेटअप अभी भी पॉजिटिव है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया। 25,550 25,550 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। बाइंग ऑन डिप्स एडवाइजेबल, नथिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट एज सच एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑप्शंस का डेटा भी, जहां पे हम कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, उनके तरफ से भी फिलहाल के लिए न्यूट्रलिटी देखने को मिल रही है। कोई एग्रेसिव पोजीशन उनकी जो शॉर्ट करी हुई है, कॉल राइटिंग पुट राइटिंग किया हुआ है, उसमें कोई चेंज इन स्टैंस नहीं है। सो दैट आल्सो बेसिकली इंडिकेट्स more or less that the bias is neutral at this point of time. The current जो एक्सपायरी का वीकली सेटअप था वो कहीं ना कहीं करेक्टिव नेचर का था। इसके चलते OTM कॉल राइटिंग वाज वन ऑफ द गुड स्ट्रेटजीज, हिस्टोरिकल very high success ratio as such seen. So corrective setup हफ्ते में रहा। इसके लिए overall the upside has been and is expected to remain limited. हालांकि this view is only limited until tomorrow because कल आपकी एक्सपायरी एक खत्म हो जाएगी वीकली और नई एक्सपायरी शुरू होगी। So then we'll have a new weekly setup basis the levels. इंडेक्स का यदि परफॉर्मेंस देखें तो टुडे नेक्स्ट 50 मिड कैप ब्रॉडर मार्केट डिड better as compared to the frontline index. So small cap, mid cap, next 50 did well, gains of anywhere between 0.7 to 0.94%, whereas Nifty was consolidating for most of the day. In the shuruat mein it was negative, tested the low of 25,645, gave a good bounce back, and is closed around the 25,750 odd level. So broadly the day was consolidative. ऑप्शंस के डेटा में भी आज इनफैक्ट इंट्राडे में बहुत सारा चेंज हुआ। जब हम ऑप्शन चेन एनालिसिस आगे चल के करेंगे तो उस पे भी मैं आपको अपनी टिप्पणी दूंगा। सेक्टर वाइज, सो रियलिटी आउटपरफॉर्म्ड स्टार फॉर द डे 2.23%, led by pharma index, and on the negative side you had IT and consumer durables, FMCG, with marginal losses, but yes, उनके वजह से ओवरऑल निफ्टी में प्रेशर था, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। ऑप्शन चेंज, ऑप्शन बिल्डअप की यदि बात करें तो कल के क्लोजिंग बेसिस पर, यानी आज के दिन की शुरुआत पे दी स्ट्राइक्स वर एट 25,500, were at 25,500 and 26,000. 26,000 continues as it is, but this open interest of 25,500 has shifted to the 25,700 mark. So now the new open interest build up is seen at 25,700 and 26,000. आज के दिन में मार्केट खुला नेगेटिव 650 के आसपास गया, वहां से रिकवरी आई और पूरे दिन 700 के ऊपर ही ट्रेड किया। एंड द मंथली सेटअप इज आल्सो पॉजिटिव एज सच. So I think keeping that view in mind, option writers would have taken the stance of shifting their positions a little higher once the downside got limited and the market was comfortably settled about 25,700. Put writers seem to have shifted their position a little on the higher side. Max pain is that number where option writers make maximum money, option buyers lose maximum money for the upcoming expiry session. Money at stake is
460 करोड़ 460 करोड़ रुपए अभी भी बेट पे है, जहां पे यदि कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आता है और निफ्टी की एक्सपायरी यदि 25,800 के आसपास होती है तो ये पूरा प्रीमियम गल कर जीरो हो जाएगा. Option writers will pocket this money, whereas option buyers will lose this money. Nifty closing is around 25,763. So नजदीक का ही लेवल है, बट yes 25,800 is the level where the market has its equilibrium, जहां पे option writers will tend to benefit maximum. Again, this number is subject to change because expiry के दिन पे open interest में काफी changes आते हैं, but a tentative ballpark number is 25,800. ये एक्सपायरी की जस्ट शुरुआत हुई है, ये महीने की भी तो 3 ट्रेडिंग सेशन में पार्टिसिपेंट्स ने क्या किया है. निफ्टी में क्लियर कट नेगेटिव शॉर्ट बिल्डअप है, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर एक्टिविटी देखने को मिल रही है. हालांकि टुडेज डेटा कुड बी डिफरेंट, दिस नंबर ओनली गेट्स पब्लिश्ड लेटर इन द इवनिंग. इसके लिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन तक का अपडेटेड डेटा है. निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ विद अ नेगेटिव बायस, बाकी इंडाइसेस में इतना बड़ा नंबर नहीं है, इसके लिए उस पे डिस्कस किया, उसको अपने एनालिसिस में कंसीडर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है. पार्टिसिपेंट वाइज यदि हम देखें तो सबसे पहले भी टॉक अबाउट एफआई प्रो. सो ऑन योर राइट हैंड साइड यू हैव इंडेक्स ऑप्शंस एंड ओवर हियर यू हैव इंडेक्स फ्यूचर्स. सो इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर एफआई नेट शॉर्ट, प्रो नेट शॉर्ट, इंडेक्स फ्यूचर्स में मार्जिनल पोजीशंस बट नेट शॉर्ट नेट शॉर्ट. So overall FI and Pro seem to be have an extremely negative bias at this point of time considering the data. और उसी के सामने you can see that the client segment is aggressively long and holding on to the long position. So FI versus Pro plus FI plus Pro versus client is the position at this point of time. Net long position by the FI segment is seen at 16%. So FI का जो index derivative futures है उसमें 100 की यदि पोजीशन है तो 16 पोजीशन लॉन्ग है और 84 पोजीशन शॉर्ट साइड पे बनी हुई है, which again is visible from the aggressive numbers that are seen over here. But पिछले कई समय से we've seen this low numbers as against earlier when I would say 2024 October के पहले this number used to be as high as 70-80%. बट अभी बिकॉज द ब्रॉडर मार्केट सेंटिमेंट और जैसे हमने आउटलुक भी बताया आपको ब्रॉडली करेक्टिव है, इसके लिए सीम्स लाइक द एफआई इज हेज्ड टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड दैट्स व्हाई शॉर्ट पोजीशंस सीम टू बी एग्रेसिव एंड दे सीम टू बी carrying forward this position. So this aggression has reduced. Last month some point of time this number was as low as 7%, currently 16%. Nothing to be very excited about, but better than the short term numbers that we're looking at. Client side continues to remain net long on the index futures as well as the index option space. Now comes the option chain analysis. आज के दिन में बहुत ज्यादा एक्टिविटी और उथल पुथल हुई है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वीकली बेसिस में क्या है. वीकली बेसिस में इफ यू सी 34,50,000 contracts on the call side, call writing. Put side is only 22,68,000 contracts. So overall weekly basis पर the bias is a little negative. करेक्टिव सेटअप जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले. बट यदि हम इंट्राडे आज के दिन की बात करें तो देयर हैज बीन सम एग्रेसिव पुट राइटिंग, जबकि कॉल में अनवाइंडिंग देखने को मिली है. अब आज के दिन में ही ये नंबर में बहुत ज्यादा चेंज हुआ. एट वन पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर अराउंड 10 lakh contracts on the call side short build up which got covered during the day, finally to close around short covering of 2.4 lakh contracts, right? और पुट साइड में अगेन द नंबर वाज वेरी न्यूट्रल, बट 4,14,000 से पुट राइटिंग में एडिशन हुआ है. तो इंट्राडे में ही बहुत ज्यादा एक्शन देखने को हमें मिला है. और ओवरऑल नेट नेट यदि ईओडी बेसिस पर देखें तो कॉल राइटिंग भी हुई है, ब्रॉडली पुट राइटिंग भी हुई है. आई थिंक दिस नेगेटिव नंबर ऑन द कॉल साइड इज बेसिकली इंडिकेटिंग के आपके एटीएम कॉल्स में कवरिंग हुई है, जबकि दूर के ऑप्शंस में राइटिंग हुई है. इसके लिए नंबर में आपको शॉर्ट बिल्डअप जरूर दिख रहा है, क्योंकि ऊपर के नंबर्स में क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है बट वैल्यू कम होगी. So there seems to be some shifting in positions where ATM positions have been covered and OTM positions seem to have witnessed some kind of a call writing. Whereas in case of put, I think there's been clear-cut option writing, fresh build-up on the put front suggesting support. इसके लिए 25,500 का जो put का जो strike था वो भी बढ़कर 25,700 के आसपास आया है. चार्ट्स देखने के पहले कुछ की लेवल्स, just to sum up before we get with a clear setup. Monthly option setup अभी भी पॉजिटिव है. OTM put writing is a clear cut suggested strategy for the month as such at this point of time.
subject to change basis the data development and level change. But yes, at this point of time, that's the view that we carry. And when I say OTM, I mean to say far OTM. Weekly setup was corrective, and that is why as we saw कॉल राइटिंग ज्यादा हो रखी है इस पूरे हफ्ते में, एंड रिकवरी भी हमको बहुत कम देखने को मिली है. कल के दिन में इन स्पेसिफिक 25,650 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल, कंसिडरिंग द फैक्ट कि मंथली सेटअप पॉजिटिव है, वीकली का करेक्टिव सेटअप कल एक्सपायर हो रहा है. तो 25,650 इज अ वेरी क्रिटिकल लेवल फॉर टुमारो. यदि उसके नीचे सस्टेन करता है तो शायद सेलिंग प्रेशर थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, पर जब तक वो नहीं करता है, वन शुड मेंटेन अ पॉजिटिव बायस फॉर दिस एक्सपायरी सेटअप, because the overall undertone and the sentiment at a broader level continues to remain positive on the monthly level. और 25,800 यदि निकाल दिया और उसके ऊपर आवरली बेसिस पर सस्टेन कर दिया, तो देन देयर आर चांसेस ऑफ अ फर्दर अप मूव. कहां तक अप मूव? 26,000 तक, बिकॉज द नेक्स्ट मेजर कॉल राइटिंग इज ओनली सीन एट 26,000. So these were the broad data pointers, levels in theory. I think now we'll just quickly add the charts over here so that we have a holistic view of what is expected and what could possibly happen. So this is the overall daily Nifty chart, जहाँ पे आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में कहीं ना कहीं we just inch towards the all-time high and again kind of fail to cross the same. आगे होगा नहीं होगा, I would not want to anticipate that. बट यस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमने वो लेवल क्रॉस नहीं किया है, और हम नवंबर की सीरीज में फिलहाल के लिए एक पॉजिटिव सेटअप के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं. ये व्यू नेगेटिव कब होगा? गिवन द करंट स्ट्रीक ऑफ द मार्केट्स और कोई मेजर मूवमेंट नहीं आता है 25,550 के नीचे यदि हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिलती है, तो मुझे लगता है ये जो ओवरऑल मंथली का सेटअप है वो पॉजिटिव से नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा, एंड देन वी विल कंसिडर मोर ऑफ OTM कॉल राइटिंग रादर देन OTM पुट राइटिंग, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि सेटअप ये सजेस्ट कर रहा है फिलहाल के लिए. सो दैट्स द डेली चार्ट फॉर यू. इसको अब हम अभी इंट्राडे लेवल पे भी देख लेते हैं. इंट्राडे में मैंने आपके लिए ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स. सबसे पहला तो आपका है कि भी स्ट्राइक प्राइस कहाँ पे, जो ये ब्लू लाइन है सॉलिड वाली, ये आपको बता रही है कि कॉल साइड में कहाँ पे, ऑप्शंस में कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है. सो 25,700 is one strike where we're seeing major build up, followed by the next level at 26,000. So that's these are the two option based boundaries that one can consider. Because the monthly setup is positive, we believe the downside risk should be limited, but any view or any outlook is incomplete without defining the risk. What is the risk over here? So this blue dotted line, which is the expiry minus 1 day, that is today's trading session low, is extremely important, which is placed at 25,645, round up 25,650. यदि इसके नीचे hourly basis पर sustain करता है, तो then the possibility of a downside risk increases. Otherwise, the chances of that happening seem to be rather limited. What could possibly happen given the data setup? One, sideways movement in the range of 650 to 700, and overall till 650 doesn't break, expect a positive bias with the next trigger point coming about 25,800. यदि 25,800 cross कर जाता है, momentum can kick in and pushing the markets towards the next resistance level of 26,000. So broadly, one level to keep in mind for the expiry session would be 25,650 hourly closing basis. जब तक वो break नहीं करता है, maintain a positive bias, nothing to fear. Follow the intraday principles. If there is put writing and the market becomes oversold, then that would give you an opportunity to actually get into a risk-defined trade. And the second setup would be sustain about 25,800, which could actually provide further momentum to the market. So that's our simplified multi-perspective analysis on the upcoming expiry. I think it's good to be as objective as possible while taking trading decisions. Your risk and reward possibly predefined makes it easy, and then it's all about execution at the right time. So 25,650, one level for tomorrow's expiry session. That's about it from my side. This is Sehaj Agrawal signing off. Hope आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो. आपके कुछ भी कमेंट्स हो तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट बॉक्स. We closely track your comments and take your feedback to make our sessions more and more better in terms of the knowledge content that we provide. That's about from my side. Have a great day today and best of luck for tomorrow's trading session. Thank you so much.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.